हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल। ओके, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, ओके, विथ रीजन। सो द आइडिया ऑफ रैशनैलिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्टडी ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। तो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड मतलब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो रैशनैलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी फॉर स्टडिंग द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। सो द two sources are mainly responsible for this rational approach। तो rational approach के लिए mainly दो sources responsible है। what are they? the idea of economic theory, okay, as it grew in economic theory। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर जो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक रैशनलिटी है वो बढ़ने लगी। ओके, दिस इज वन सोर्स। एंड सेकंड वन इज the idea of bureaucratic rationality as is advocated in the sociological theory of organization। तो जो सोशोलॉजिकल थ्योरी थी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर भी आइडिया ब्यूरोक्रेटिक ओके रैशनलिटी ये भी सामने आई। तो इस तरीके से दो जो सोर्स है ओके दैट आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द रैशनल अप्रोच ओके फॉर स्टडिंग द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिटी एज इट हैज़ बीन अप्लाइड इन द पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो जो आइडिया है मेनली जो कॉन्सेप्ट है रैशनैलिटी का वो कहाँ पे अप्लाइड होने लगा? पब्लिक पॉलिसी के अंदर। सो एज इट रूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक मैन अ कैलकुलेटिंग सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल। तो इसका जो मेनली इस रैशनैलिटी का ओके मेनली क्या यूज होने लगा पब्लिक पॉलिसी के अंदर? फॉर क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन से क्या मतलब है? कैलकुलेटिंग सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल। ओके, मतलब जो खुद का जो इंटरेस्ट है उसको स्टडी कर सके, उसको कैलकुलेट कर सके, ओके, उसको समझ सके। ओके, दैट इज द इकोनॉमिक मैन। एंड दिस मैन ओनली क्रिएट आफ्टर मेकिंग द पब्लिक पॉलिसी ओके पब्लिक पॉलिसी विथ रैशनैलिटी। So the Weberian model, okay, formulated by the Max Weber. Max Weber was the German sociologist of the rational imperative or the choice of the most appropriate means to achieve the desired end for transforming the analytical approach to decision making status or decision making studies। okay, so decision making studies के लिए हमें भी एक डिज़ायर मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए? रैशनैलिटी चाहिए। वैसे कोई भी अगर हमें अपना जो डिज़ायर गोल है उसको अगर अचीव करना है तो हमें एक प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट चॉइस विल बी द डिसीजन मेकिंग। सो दैट इज मेनली कंसर्न विद द वेबरियन मॉडल। सो दिस अप्रोच एम्फेसाइज दैट पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्व चॉइस अमॉन्ग पॉलिसी अल्टरनेटिव ऑन रैशनल ग्राउंड। तो मेनली यही अप्रोच जो है ओके एम्फेसाइज करता है इन द पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्विंग चॉइस। ठीक है, हमारे पास पॉलिसी होंगी, मल्टीपल पॉलिसीज होंगी, अब उसमें से हमें एक पॉलिसी लेना है। ओके, एंड दैट पॉलिसी वी आर टेकिंग। ओके, इट मीन्स व्हाट? वी आर मेकिंग द डिसीजन ओके टू चूज वन पॉलिसी अमॉन्ग मल्टीपल पॉलिसीज। ओके, एंड वी शुड नो द rational ground behind choosing that particular policy among all that policy। So rational policy making is a to choose okay the one best one। हमें बहुत सारे ओके मतलब एक बहुत सारे इसमें से हमें एक बेस्ट ओके सिलेक्ट करना है ओके फॉर द एंड दैट इज द मेनली पॉलिसी मेकिंग। ओके, सो रैशनल पॉलिसी मेकिंग इज द चॉइस। ओके सर, so choose one from the बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो मेनली इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो सॉरी जो बहुत सारे जो पॉलिसीज मिलेंगे ओके वी आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस ओके फॉर द पॉलिसी मेकिंग। ओके, डिफरेंट ऑप्शंस वी विल गेट फॉर मेकिंग द बेस्ट पॉलिसी। So we have to choose one option okay we have to select one option and that option will be the best one। and how that will best one? if we choose that option on the logical basis। okay, so that is what here is telling about the rationality model। okay, so Thomas Dye equate rationality with efficiency। a policy is rational when the difference between the value is achieved and the value it sacrifices
in positive and higher than the other policy alternative। तो हमें जो डायर है वो बताते हैं, थॉमस डायर बताते हैं कि जो रैशनैलिटी है ओके वो क्या होनी चाहिए, इफिशिएंसी के साथ होनी चाहिए। एंड अ पॉलिसी इज रैशनल व्हेन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इट अचीव एंड द वैल्यू इट सैक्रिफाइस इज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई पॉलिसी बना रहे हम तो जिसमें हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके, एंड दैट इन्वेस्टमेंट आफ्टर आफ्टर दैट पॉलिसी will implement okay, the whatever the output will come, that output will be the higher one okay, higher one from the this one okay, while implementing that policy okay, whatever the input we provided, so that input will be okay, will be less than the output that we get okay after the policy implementation okay। So such type of difference only will okay, this type of difference will make the policy okay, policy a better one, it means our choice is good okay, we choose the best one। likewise देखिए क्या बोलता है, अ पॉलिसी इज रैशनल व्हेन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इट अचीव ओके एंड द वैल्यू इज सैक्रिफाइस इज द पॉजिटिव ओके। मतलब ये कि जो वैल्यू जो अचीव किया गया है ओके ओके, एंड द and the value is achieved and the value is sacrificed okay, while formulating okay is the positive one okay, this one is the positive one, then okay higher than any policy alternative okay, so, higher than any policy alternative, it means what, it means our decision is good one okay। So he further observed that the idea of efficiency involves the calculation of all social, political and economic values sacrificed or achieved by public policy, not just those that can be measured in monetary terms। तो इसमें हम जो हायर और लोअर जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द all the social, economical and political okay sacrifice, means whatever the value we get okay, social, political or economical okay, that is mainly used for measuring the differences between the achievement and while formulating okay, while making। so इसमें सिर्फ हम मॉनेटरी टर्म मतलब सिर्फ पैसे का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वी ऑल्सो कैलकुलेट द सोशल एंड पॉलिटिकल okay, social and political values determine okay, that also determined in the public policy। so this is what we mainly read about the rational policy making model okay। so what is the main reason for making the rational policy making model, it is tell the exact okay okay, it is help to make the policy with the rational okay, with the logical reason। so therefore this model is very useful in the policy making। now we will see the condition and stages for rational analysis। so rational decision making model is a model of decision making in which it is assumed that decision makers have nearly all information about a problem, so it cause and its solution at their disposal। so whenever a large number of alternative can be weighted and the best one selected, thomas dye prescribe a few requirements to policy makers in selecting a rational policy। they must, अभी देखेंगे हम कि जो डायर ने बताया ओके, थॉमस डायर ने बताया कि क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए ओके फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉलिसी ओके। देखिए सबसे पहला है नो ऑल द सोसाइटी वैल्यू प्रेफरेंस एंड देयर रिलेटिव वेट ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, नो ऑल द पॉलिसी अल्टरनेटिव अवेलेबल ओके। व्हाट मेनली हम क्या पढ़ रही है कि जो थॉमस डायर ने बताया कि while selecting the best one what are the thing that you should keep in your mind okay before you select one। so these all the 5 things that you should know before selecting the best one okay। first, know all society value okay, value preference okay, सोसाइटी क्या चाहती है ओके एंड देयर रिलेटिव वेट्स ओके। और उसके बाद हमें क्या, हमें उनके प्रेफरेंस के बाद उनको हमें रिलेट करते हुए उनको समझना है, उनके प्रेफरेंस को समझना है ओके, उनके प्रेफरेंस को वेटेज देना है।
देन ऑल दी नो ऑल दी पॉलिसी अल्टरनेटिव अवेलेबल, हमारे पास कितनी अल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल है, ओके, दैट ऑल्सो यू शुड नो while making the decision. Then third one is the know all the consequences at each policy alternative, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ओके, ऑफ द पॉलिसी फॉर पर्टिकुलर डिसीजन, ओके, देन यू शुड आल्सो नो ईच पॉलिसी कॉन्सिक्वेंस, अगर हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे फॉर दिस रीजन तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके फायदे और नुकसान होंगे, अगर हम ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे फॉर दिस रीजन देन क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ओके, अगर हम ये करेंगे लाइकवाइज, ओके, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, एट ईच पॉलिसी अल्टरनेटिव. देन फोर्थ वन इज द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट फॉर ईच पॉलिसी अल्टरनेटिव, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा, इस पॉलिसी अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते, ओके, तो इससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, अगर हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते तो व्हाट बेनिफिट वी विल गेट फ्रॉम दिस पॉलिसी. So likewise we have to calculate the ratio, okay, we have to compare, mainly calculating the ratio, it means we are comparing the policy, okay, in the profit basis. So select the most efficient policy alternative. Now at last we have to select the best one, okay, which policy will be the best for this cause, okay, so that you should know, okay, by understanding all these things, okay. So, rational policy making is very difficult exercise. It requires capacity to know the consequences of alternative policy and the intelligence to calculate correctly the ratio of cost to benefit. Okay, तो हमें हमें जो रैशनल पॉलिसी मेकिंग जो है ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, हमें पता होना, इसके लिए अगर ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए मेनली कैपेसिटी चाहिए टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें पता होना चाहिए क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, ये सभी जो अल्टरनेटिव पॉलिसीज है, तो एंड द इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंट कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस टू कैलकुलेट द करेक्टली रेशो, ओके, और हमें क्या चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, ओके. सो हर्बर्ट साइमन फर्दर नोटेड although individual are intendently rational, their rationality is bounded by limit cognitive, okay, cognitive emotion capacity. So जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए जो है, इस रैशनैलिटी का डिसीजन लेने के लिए हम बाउंड है ऑन द लिमिट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ओके, कैपेसिटीज के ऊपर. सो रैशनल पॉलिसी मेकिंग दस रिक्वायर्ड मेकिंग हार्ड चॉइस अमॉन्ग पॉलिसी अल्टरनेटिव, तो हमें क्या होना चाहिए, while making the policy, okay, with the rational, with the rationality, then we have to, that decision required the hard choice, okay, among the policy alternative, हमें बहुत कठोर निर्णय लेना है, okay, whatever the option we are available. So it entail a sequential approach of many stages before the most efficient policy alternative is selected. Once a policy choice is selected, the rational policy makers is required a rational policy maker is required to monitor its implementation systematically to ensure the accuracy of the expectation and the estimates, okay. तो जैसे हम पॉलिसी को बनाने के बाद उसको मॉनिटर करना, ओके, व्हेन दैट पॉलिसी विल इम्प्लीमेंट, ओके, जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद उसको सिस्टमैटिकली, ओके, उसको सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें उसको मॉनिटर करना है और हमें उसके अंदर सभी चीज़ें चेक करना है, ओके, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेक्टेंसी एंड एस्टिमेट, ओके, तो हमें इंश्योर करना है जो भी हमने उस पॉलिसी से लेके जो भी आशा रखी है, जो भी एक्सपेक्टेशन रखा है, जो भी एस्टिमेट बना है, ओके, ये सभी चीज़ें हमें एक्यूरेटली इंश्योर करना है. इफ नेसेसरी द पॉलिसी मेकर मे मॉडिफाई द पॉलिसी और गिव इट अप ऑल टुगेदर, ओके, तो इसमें
क्या है, जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो हमें उसको ऑब्जर्व करते रहना है। फिर इसके बाद जो भी नेसेसरी, जो भी मतलब चीज़ें लगेगी उस पॉलिसी में, ओके, फॉर दी फॉर द टारगेट, ओके, फॉर द ऑब्जेक्टिव, ओके, फॉर द ऑब्जेक्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, द पॉलिसी मेकर मे मॉडिफाई द पॉलिसी, ओके। तो पॉलिसी मेकर उसमें उस हिसाब से एज पर द नीड उसमें मॉडिफिकेशन ला सकता है। एंड दिस कैन बी द फीडबैक स्टेज ऑफ रैशनल पॉलिसी मेकिंग, ओके। तो ये क्या है, मेनली फीडबैक स्टेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, हमें उससे पॉलिसी के फीडबैक मिलते हैं। सो वट एवर द फीडबैक वी आर गेटिंग, we have to implement that feedback into the policy, and that policy, okay, will be called the modified policy, okay. And according to the, again, if feedback is come after getting a last feedback, then this is re modified policy. So likewise, the policy first is formulated, then implemented, then modified, then again remodified. Likewise, this will continue, okay. So mainly because of the rationality, we have taken a proper decision, okay. And the in in this topic, this Thomas die, okay, Thomas die the point, okay, how we can take a proper decision for choosing the best alternative available policy. So for that we have to remember this point, okay. So this is all about the conditions and stages for rational analysis. Now we will see the constraint, okay, constraint, what are the restriction, okay, to the rationality, okay. तो क्या क्या ऐसी मतलब restrictions आती है to the rationality, that we will going to discuss here, okay. See, the first one is the first one is the accomplishing goal, okay. The concept of rationality is bandied about so much as so indiscretionary that it threatens the loss its value. It is more widely found in the theory than in the practice. तो ये बोला गया इसमें जो रैशनैलिटी है ये सबसे ज़्यादा थेरी में पाई जाती है, एंड इट इज़ वेरी मच लेस इन द practice. Some of the important constraints to rational policy makings are accomplishing goal, okay. Rational policy making is very difficult exercise. The expectation that rational policy will always emerge is limited, okay. जो rational policy है वो बहुत कम मतलब इमर्ज हुई है. By the time of the policy maker recommend policy analysis, rational policy, the problem is the problem in question may at time become so complex that the prescription become decision that are made on the basis of other goal, okay. So it is also possible that decision makers try to maximize their goal reward, such as power, status, money, and prospect of re-election. Therefore, rational policy making might turn out to be more an exercise than actual realization of the said goal. तो इस तरह से ये चीज़ें कुछ कुछ बाधा डालती है for the achieving, for accomplishing the goal, okay. Then securing optimization, the rational policy making model is expected to produce optimal result, okay, but reality it does not always happen. The public interest is considered to be more important than being merely the sum of individual interest, okay, in the policy. If air pollution control is a public interest because all share its benefit, then the strategy might require the very automobile sold, okay. Then strategy required that every automobile sold is to be fitted with the expensive set of anti pollution emission control device, okay, making it more, okay, making it cost more. Yet few citizens are willing to pay more from their pocket to reduce automobile emission. Thus the motivation for various stakeholders in the policy try to maximize said goal, okay. So this तरह से securing optimization is also one of the constraint for the rationality. Now third one is the conflict between rational choice and need for action, okay. So there is often a conflict between search for rational behavior and need for action. As already stated, policymakers are not motivated to make decisions
on the base of rationality, but they try to maximize their own reward. Okay, so secondly, the time for the thoroughly analysis for implementing legislature may be short. In an emergency situation, action be sought immediately. There is also no consensus on the social values, okay, societal value, the prevalent of any conflicting value among special group and individual, make it difficult for policy makers to compare and weight the available alternative before taking a decision. Then dilemma of political feasibility. The dilemma of political feasibility also confront very, okay, every policy makers. The best decision may not be political desirable, it may not be vote getters. Okay, तो क्या है मेनली वोटिंग, ओके, इन द पॉलिसी प्रोसेस, वोट मिलेगा तो उस तरह से पॉलिसी बनेगी, अगर वोट नहीं मिलेगा देन पॉलिसी विल बी नॉट मेड. सो पॉलिटिशियन टू ऑफन रिजॉल्व टू द डिलेमा ऑफ political feasibility by avoiding a conflict, safe bet for them, uncertainty about the consequences of different policies. Alternative may also be force politicians to stick to previous policies. Elect officials do not want to sacrifice their chance of re-election at the cost of rationality in policy making. Okay, so that also make different. Then problem of cost benefit analysis. It is difficult for policy policy makers to calculate the cost benefit ratio accurately when many diverse social, economic, political, cultural value are at stake. Okay, so apart from this, policymaker have personal need in have inhibition and inadequacy which render them incapable of assessing all possible alternative to arrive at the rational decision. Then segmentic natural benefit or bureaucracy. Okay, segmentic natural of bureaucracy, another important obstacle to rational policy maker is what Thomas Dyer refer to as the segmented nature of the policy making in a large bureaucracy, which make it difficult to coordinate decision making so that the input of all the various specialists is brought to bear at point of decision. Fragmentation of authority, satisfying personal goal, conflicting value, limited technology, uncertainty about the possible policies, alternative and consequences, therefore, and other factor limit the capacity of bureaucracy and other public organization to make rational policy. So these all are the, okay, segmented natural of nature of segmented nature of bureaucracy, then problem of cost benefit analysis, then dilemma of political feasibility, conflict between rational choice and need for action. Okay, then securing optimization and accomplishing goal. Okay, these all are the main constraint, मतलब ये मेनली बाधाएं है, ठीक है, रैशनल डिसीजन लेने के लिए. ओके, सो मेनली रैशनल पॉलिसी मेकिंग के लिए जो जो मेन बाधा है. ओके, ऑल दिस, ओके, ऑल दिस आर दी मेन constraint. Now the the pursuit of rational model by analysis would be often undemocratic. So then Hard observed that policy analysis typically apply technical solution to immediate problem. Under such circumstance, then Hart notes technical concern would be display political and ethical concern on the basis of public decision making, therefore thereby transforming normative issue into technical problem. For example, on July 2015, the National Green Tribunal banned all commercial activities including horse riding, snow biking, okay, and paragliding at Rohtang, Solang, and Marhi. It was not wise direction. Okay, it stand a reason that the rational policy making model set up goal and procedures involving very difficult exercise. It is not always impossible to exercise at least some policy arenas. Indeed, it is desirable in the public interest that policymaker attempt to maximize the outcome. As such, this model remain one of the critical important for analytic purpose, as it also help in identifying the constraint
to rationality. Okay, rationality. So this is all about the this model, that is the rational model. Okay, rational policy making model. So this was about this video. Okay, and this was about this topic. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.